Hi guys, this is Herleen from Officer's Mind. Let's discuss about a very prestigious award, the Ramon Magsaysay Award. ये अवार्ड 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड द फिलिपीन गवर्नमेंट इन न्यूयॉर्क. Popularly, this is called Asia's equivalent to the Nobel Prize. तो ये अवार्ड किसे दिया जाता है? It is given to individuals and organizations in Asia जिन्होंने सोसाइटी को सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करी हो. ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि हर साल अगस्त 31 को प्रेजेंट किया जाता है. This coincides with Ramon Magsay's birthday, who was the 7th president of the Philippines. He set an example of integrity in governance, courageous service to the people and pragmatic idealism. Ramon Magsaysay Award एशिया का एक प्रीमियर प्राइज एंड हाईएस्ट ऑनर माना जाता है. इन ओवर 6 डेकेड्स ये अवार्ड 344 इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेजेंट किया गया है. The awardees are selected by the Ramon Magsaysay Award Foundation Board of Trustees. उन्हें एक सर्टिफिकेट और मेडालियन दिया जाता है with an embossed image of Ramon Magsaysay. 1958 से 2008 तक it was given in 6 categories annually: government service, public service, community leadership, journalism, literature and creative communication arts, peace and international understanding, and emergent leadership. 2009 onwards, ये अवार्ड फिक्स कैटेगरीज में नहीं दिया जाता. The only criteria is emergent leadership. It is presented in a formal ceremony in Manila, Philippines. Some of the prominent Indians who have won this award include Vinoba Bhave, Mother Teresa, Kamla Devi Chattopadhyay, Satyajit Ray, Mahasweta Devi, Arvind Kejriwal, Anshu Gupta and Ravish Kumar. तो इस साल दैट इज 2023 किस इंडियन को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? इट हैज बीन रिसीव्ड बाय अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर रवि कन्नन. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कच्चर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन असम. उन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन असम थ्रू हिज पीपल सेंटर्ड एंड प्रो पुअर प्रोग्राम्स. He offered free treatment, food and lodging to patients. Moreover, he also provided employment for caregivers. This year, it was the 65th edition of the ceremony. इस बार 4 एशियंस को ये prestigious award दिया गया है. Apart from Dr. Ravi Kannan, it has been bestowed upon Mr. Korvi Rakshant from Bangladesh for his contribution in developing inclusive education for the underprivileged children in Bangladesh. Mr. Eugenio Lames from Timor-Leste for his Nobel contributions to how young Timorese view nature and their surroundings. And to Ms. Miriam Colonel Ferrer from Philippines for her unwavering belief in the transformative power of non-violent strategies in peace building. कुछ facts हैं जो आपको पता होने चाहिए. The first Indian to receive this award was Vinoba Bhave under the category of Community Leadership in 1958. The first Indian woman to receive the award was Mother Teresa in 1962. She was awarded under the category Peace and International Understanding. आप कमेंट्स सेक्शन में बताइए कि अब तक कितने इंडियंस को ये अवार्ड मिल चुका है. Subscribe to our channel Officer's Mind for more such videos.